Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of Nust. I'm your host Sana Zafar. As always, आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक और brilliant star who is joining us from North Carolina. We have with us Dr. Savera Tanwir. Assalamu alaikum Dr. Savera. Thank you for joining us. Assalamu alaikum everyone. It's my pleasure to be here. Dr. Savera ने MCS से graduate किया back in 2004 with a degree in software engineering, and currently she is senior technical architect, justice and public safety at SAS Institute. आइए इनकी अमेजिंग जर्नी के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. सो डॉक्टर सवेरा, थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट. प्लीज हमें थोड़ा सा बताइएगा अपनी फैमिली के बारे में. यू हैव अ डॉटर माशाल्लाह. हाउ ओल्ड इज शी? So she's 10 years old, mashallah, and she's doing great. ओह माशाल्लाह, गुड टू नो. थोड़ा सा प्लीज हमें अपनी हॉबीज के बारे में बताइएगा इससे पहले कि हम जरा PhD तक जाएं. आई हैव हर्ड something that your nephews are a great fan of your cooking, mashallah, and you actually have a YouTube channel for convenient desi recipes. How cool is that? I do. I have always loved food and cooking, and in North Carolina or outside Pakistan, you usually don't get जो same flavor आपको पाकिस्तान में मिलता है या जो खाना आप खाते हुए जवान होते हैं. तो मुझे हमेशा I like good quality food. So फिर I'm such a busy person with work and life, and I'm a parent. So there are these appliances these days like inside grill or आपने सुना होगा instant pot and things like that. So I got those to cook fast, good food, cook fast with the recipes जो मेरी family use करती है या जो मेरी mom की recipes हैं, जो मेरी दादी की recipes हैं. So my channel is about cooking good food but fast using these modern devices. And it has caught up because वहाँ पर इतनी देसी food की recipes नहीं थी. So I think it's helping people out. Yes, definitely. I've gone through your channel and it really is convenient. The short videos to the point, and I really like those as well. Thank you so much. आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है. आपने वायलिन सीखने का भी अटेम्प्ट की एक दफा बीच में. आई हर्ड आप माशाल्लाह बुक्स भी लिख चुकी हैं. आई डोंट नो इफ दैट्स कवर्स इन हॉबीज और एक्चुअली इन प्रोफेशनल लाइफ, बट यू हैव रिटन 2 books माशाल्लाह. सो यस, दैट्स क्वाइट कूल हॉबीज देयर. So म्यूजिक में मुझे इंटरेस्ट है और मैंने बिल्कुल वायलिन सीखने की कोशिश की, मगर मेरे पास इतना प्रैक्टिस का टाइम नहीं था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी. बट आई वुड लव टू डू दैट व्हेन आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. राइट नाउ मेरी बेटी सीख रही है और उसको भी काफी इंटरेस्ट है. शी वर्क्स हार्ड, शी प्रैक्टिसेस एवरी डे. तो चलो मेरा जो शौक है वही पूरा कर लेते हैं. या दैट्स सो नाइस. ठीक चलें. सो दिस जी सॉरी, बुक्स जो है वो hobby nahi as such. They are part of my professional journey. So okay, yeah, but mashallah you managed to write too. हम उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. So आपकी hobbies से तो you sound like a very fun person, इसलिए मैं फौरन आपकी fun memories जानना चाहती हूँ from MCS times, कोई university time से. anything fun you did with your friends you want to remember today? बिल्कुल, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं. जैसे हम लोग 4 साल MCS में साथ थे, तो मेरी फ्रेंड्स अब मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो प्लीज माफ कर दीजिए. मदिहा, बशारत, अम्बरीन, सना, एंड बॉयज में वलीद, अजीज, हम लोगों ने साथ प्रोजेक्ट किया था सन लैब में जो नीट में होती थी. इसके अलावा फन मेमोरीज मेरी बहुत अच्छी एक ट्रिप की हैं जो हमारी क्लास ट्रिप गया था मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट, और हम बहरीन से होते गए थे. सारा टाइम अंताक्षरी खेलते गए थे. तो पहले हमारी क्लास इतनी आपस में connected nahi thi, magar with that trip we really got along with each other, and it was a very fond memory that I had. Other than that, हमारे कुछ girls function होते थे जिसमें हम participate करते थे, और उसमें मारिया, seniors में मारिया, शैला, उनके साथ बहुत अच्छी memories हैं उस functions की. इसके अलावा teachers में डॉक्टर सईद बहुत अच्छे टीचर थे. आपने नाम और लोगों से भी सुना होगा. देन डॉक्टर अरशद अली के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की. सो दीज आर सम ऑफ द गुड मेमोरीज रिगार्डिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. Yes, yeah. Definitely. And I think yahi memories हैं which stay with you the whole life. They are always fresh. You can always recall them and have fun. चलें, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी आपकी प्रोफेशनल जर्नी की तरफ भी. बताइएगा, आपने एमसीएस से ग्रेजुएट किया, उसके बाद से माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट. यू हैव done your masters, your PhD, professionally you have excelled. आप आज यहाँ हैं. इसके दरमियान में बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ शेयर कीजिएगा.
सो जर्नी कोई ऐसी स्ट्रेट नहीं है, इट हैज लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। जर्नी मेरी एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है जब मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही किया डॉक्टर अरशद अली के साथ, जो नीट के उस वक्त डीन थे और अब सीक्स कहलाया जाता है वो। तो डॉक्टर अरशद एक बहुत ही डेडिकेटेड थे इंडिविजुअल थे, जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स करना। तो उन्होंने एक सान लैब बनाई थी जिसमें ग्रिड कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स थे। तो एक मेरा भी प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था, जो मैंने MCS में जैसे लास्ट 2 सेमेस्टर्स आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है। So I used to work at Stern Lab with some students, some other students. It was a great opportunity. We collaborated with CERN, Switzerland and Caltech, USA. उसी सिलसिले में फिर बाद में उन्होंने मुझे समर इंटर्नशिप के लिए भी रेकमेंड किया और मैं 3 महीने स्विट्जरलैंड गई। मारिया की भी कुछ ऐसी जर्नी है आपने सुना होगा, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग हर ऑन दैट। Came back and I became a research assistant in the same lab for some time. और क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत एकेडमिक साइड पर है और मुझे भी काफी इंटरेस्ट था रिसर्च में, तो फिर मैंने मास्टर्स तो लाइक इट हैज टू बी देयर। सो मास्टर्स के लिए मैंने फिर अप्लाई किया US कनाडा में, और फिर मैं नॉर्थ कैरोलिना में मुझे एडमिशन मिला कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्राम में। तो फिर मैं नॉर्थ कैरोलिना आ गई और 2 years मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। देन बिकॉज इट वाज फंडेड बाय नस्ट, नस्ट ने इसकी डॉक्टर अरशद अली ने इसको he recommended me and then I got funding from Nust। तो फिर मुझे 3 साल जो है वो नस्ट में पढ़ाना था as a that and I taught at Nust Seeks। कुछ टाइम वो चकलाला में था और कुछ टाइम वो S12 में था। Yeah, and I taught undergrad students in communication system engineering, electrical engineering, information technology, और आपको तो पता है नस्ट के स्टूडेंट कितने ब्राइट होते हैं। तो शुरू में it was challenging for me क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैं कभी टीचिंग असिस्टेंट भी नहीं रही थी as such, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, but then I got the hold of it and it was such a rewarding experience, उनको पढ़ाना, उनको FYP में उनको advisor बनना, and then to see them, go through that and go to really good universities and do their own PhDs and master's program and excel in their career. Or sometimes, these students write to you, which is like just so rewarding and heartwarming. तो anyway, टीचिंग करती थी तो मुझे पसंद थी और उसमें भी एक्सेल करने के लिए आई थिंक PhD की जरूरत थी। तो फिर मैंने PhD का इरादा किया, although I didn't really go back to Nust and taught, and I changed my path there, but I didn't go for the PhD, and I came back to the same advisor, Dr. Peros. He advised me during my master's program as well, and I was like very sure I'm going to continue with him because he's such a great mentor and sponsor. And he challenged me and pushed me to the limit so that I performed the best. And, as a result of that, I wrote a great thesis and got the best thesis awards. और उन्होंने ही मुझे opportunity provide की book लिखने की. And yeah, so this is the thing, when you're given opportunities, तो आपको, if you can do it, if you can just contribute, you should take it. तो मैंने लिया, it took some effort, but then the result was really great. और मेरा thesis भी video traffic modeling पे ही था। तो आई थिंक तो पहले 3 साल मैं TA थी और रिसर्च भी कर रही थी, लेकिन आई थिंक इन 4th year व्हाट हैपेंड वाज हमारी फंडिंग अप्रूव नहीं हुई रिसर्च की, तो मेरे प्रोफेसर के पास फंडिंग नहीं थी। ही इज अ रियली ग्रेट प्रोफेसर एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू विद हिम। तो उसी टाइम पे आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स। तो मैंने SAS की एक यूनिवर्सिटी के उसमें आपको ईमेल्स आती हैं या उनकी न्यूज़लेटर में SAS में एक ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप अवेलेबल है, जो कि थी तो फाइनेंस में, लेकिन उसमें बहुत स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग रिक्वायर्ड थी। और मैं भी वीडियो लाइक नेटवर्किंग में काम कर रही थी, मगर इट वाज आल्सो वीडियो ट्रैफिक मॉडलिंग स्टैटिस्टिक्स। तो इट्स सॉर्ट ऑफ मैथ्स, सो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया और हो गई। फिर मेरा 2 साल उन्होंने स्पॉन्सर किया, दे पेड फॉर माय ट्यूशन फीस एंड जो भी मंथली होता है। And their culture was very good. They gave a lot of flexibility. तो जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उन्होंने भी obviously जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो फिर मैंने उन्हीं को ज्वाइन कर लिया।
But that job was in finance, in liquidity risk management for banks, financial instrument pricing. थोड़ा dry subject था. Although I was good at Yeah. umbrella, मगर इतना rewarding नहीं था मेरे लिए. So I believe in lifelong learning. I keep learning new things, and I went through several courses on machine learning, data science, और मैंने अपने professor के साथ भी कुछ labs develop की in data science and analytics. तो मैंने काफी उसमें beside my work कुछ experience collect किया. तो last year फिर मैंने एक position देखी in justice and public safety. Um, and that was like a data scientist position. You do some analytics, modeling, some data science, looking at the data and taking decisions on that. और वो मुझे बहुत attract की. So I switched to justice and public safety within SAS last year, and I'm just loving it. I really enjoy this work because I get to work on things like police department को help करना, evidence based policing. Now that we have so much data, हम अपनी policing कैसे improve कर सकते हैं? What are the hot spots in the area? Crime के hot spots हैं, तो हम उन्हीं को target करें, क्योंकि आपको पता है आजकल resources की कमी है, लोग इतना ज़्यादा पुलिस में नहीं जाते हैं अमेरिका में. I think world wide भी ऐसा ही है, क्योंकि इतनी प्रोटेस्ट हो रही हैं, आपने देखा होगा बहुत जगहों पे रेसिज्म पे. तो डेटा को यूज करते हुए गुड डिसीजन मेकिंग. देन आई एम आल्सो वर्किंग ऑन dealing with this opioid crisis जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, और जेलों में भी बहुत लोग हैं जो opioids में हैं, तो उनको medication assisted program में जाना so that they get off opioids और fatal overdose को कम करें, help them. Then again people जो जेल और prisons में जाते हैं, जब वो वापस जाते हैं, तो क्या होता है कि वो बाहर की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर वो किसी और क्राइम में वापस आ जाते हैं. तो एक साइकिल बन जाता है क्राइम का. सो उसको किसी तरह ब्रेक करना है. That help train them using the data, using their skills. कैसे आप उनको जो है वो बाहर एडजस्ट करें कि वो दोबारा जेल में ना आए, उनकी बाहर जिंदगी अच्छी बनाए. तो इस पे कुछ काम कर रही हैं, उसको हम रेसिडिविज्म बोलते हैं. कुछ जो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है कि क्राइम जो है वो अभी ऐसे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कैसा what is the forecast or how do you deal with that. तो बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस. अभी मैं इन सब पे तो नहीं कर रही, बट आई प्लान टू. सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस वर्क एंड इट्स लाइक रिवॉर्डिंग. Thank you so much for sharing such an amazing and inspiring journey, especially जो आपने end में बताया. This work sounds so meaningful and so much needed. So we're very proud that you're actually doing all of that. उसके अलावा भी आपकी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त है, मज़े की है. माशाल्लाह you achieve what you wanted to achieve. आपने जैसे बताया, आपने मास्टर्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने then you taught at Nust at SEEKS, then you did your PhD, and eventually what you're doing, you're enjoying it. I think that's the best kind of thing you can do in life, that you enjoy your work, you love it. आपकी इस अमेजिंग जर्नी को देखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि थिंग्स हैपेंड, सम थिंग्स वेंट एज प्लान्ड, समथिंग मे बी डिडंट गो, बट एज अ होल हम जर्नी देखें तो हमें बहुत इंस्पायरिंग लगती है और लगता है कि बस सब कुछ हो गया. बट आई एम श्योर कोई बीच में चैलेंजिंग स्टेप्स, कोई फेलियर्स, कुछ ऐसा आया होगा जो आपके लिए उस वक्त इतना आसान नहीं होगा जितना अब हाइंडसाइट में सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है. सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दोज एज वेल, बिकॉज हु आर वाचिंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड, दे शुड गेट अ रियलिटी चेक दैट हाउ टू फेस दोज व्हेन दैट हैपेंस. Absolutely, Sana. I think this is a very valid point. क्योंकि किसी की भी जर्नी ऐसे स्मूथ नहीं होती. And yes, I have failed many times and in different capacities, like everybody. It's like human beings fail, and failure is part of the success. You learn through your failures. But the key is कि आप give up ना करें, ठीक है? You always try your best, give it your all. और फिर उसका रिजल्ट समटाइम्स आपके हाथ में नहीं होता, राइट? मगर की ये है कि आप जब फेल होते हैं, डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी, अपना पाथ चेंज करें या अपने आप को, अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करें, राइट? तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होती है फेलियर की. जैसे आप
को जॉब में रिजेक्शन हो जाती है, आप कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया एंड यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दिया है, पर आप रिजेक्ट हो गए एंड यू डोंट रियली नो व्हाट हैपेंड, राइट? सो इट्स अ सेटबैक इन योर लाइफ। सिमिलरली आपने यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई किया है और आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, दैट्स अ सेटबैक। रिलेशनशिप में भी फेलियर्स होते हैं और फेलियर के बाद लोग एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जा सकते हैं। इट्स इजी टू डू दैट, यू फील पिटी, यू पिटी योरसेल्फ, बट द की इज आपको कॉन्शियसली उस स्पाइरल से बाहर निकलना है और यू ट्राई टू बी हैप्पी, यू नो, यू जस्ट चेंज योर पाथ, यू नो, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग दैट यू नो दैट सेटबैक। सो एक एग्जांपल मैं दूंगी कि जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरी काफी सारी फैमिली कनाडा में रहती है, मेरे 3 चचा रहते हैं, तो मुझे बस कनाडा जाना था, यू नो, मास्टर्स के लिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी टोरंटो में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में अप्लाई किया था और अमेरिका में मैंने सिर्फ एक नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और बस एज लाइक अ बैकअप, राइट? तो मेरा उन दोनों यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ एडमिशन एंड इट वाज लाइक अ सेटबैक। वाज लाइक, यू नो, मेरा तो रिज्यूमे भी इतना अच्छा था, क्यों नहीं मुझे लिया? बट आई डोंट नो, यू नो, इट्स नॉट इन माय हैंड। सो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस कि मैं दोबारा अप्लाई करूं, कुछ एक सेमेस्टर वेट करूं या एक साल वेट करूं, कुछ स्किल सेट बढ़ाऊं, या फिर मैं, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है मैं वही अवेल कर लूं। तक मैंने सोचा कि यू नो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्राम भी अच्छा है, यू नो, व्हाई नॉट, आई विल गो देयर, और उसके बाद अगर मैं कभी भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकते हैं आप। इट्स नॉट रिटन स्टोन कि आप इधर नहीं गए तो यू नो आपका बस करियर खत्म हो गया। एनीवेज, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ। मैंने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाए और यू नो इट वाज जस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जो मेरे एडवाइजर थे, ही वाज सच अ ग्रेट प्रोफेसर, एज आई सेड कि हम वो मुझे बहुत चैलेंज करते थे और यू नो बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते थे। ही रियली वांटेड टू सी मी एक्सेल। सो और जब फिर मैं पीएचडी के लिए आने लगी तो तब मैं इतनी क्रिस्टल क्लियर थी कि मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था मैंने इसी प्रोफेसर के साथ ये रिसर्च करनी है एंड यू नो see, you know, that one setback led me to a different path, and that could, you know, if you work hard, then you, that can lead you to success too. I think that's a very wonderful tip, and like we just said कि बहुत ज़रूरी है कि हमें इन aspects का भी पता हो. It's not like, you know, something is always served in a tray and it's so easy. Of course ये वाले setbacks आते हैं, but important is to keep going, not giving up, and whatever is available at your hand, just, you know, make use of it. So Yeah. इतना आसान नहीं होता, because depression में बंदा बड़े आसानी से चला जाता है, especially if you have been planning about something and all of a sudden doesn't happen. But then you have to pick yourself up. You don't have a choice. That's true. ये आपने बताया कि फेलियर्स भी आए लाइफ में और आपने कैसे डील किया, और माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग जहां आप हैं। इस सब को देखते हुए आप अपनी सक्सेस डेफिनेशन कैसे बताएंगी? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस नाउ, एंड इज इट एनी डिफरेंट देन इट यूज्ड टू बी अर्लियर? एब्सोल्युटली। जब मैं छोटी थी तो जैसे बच्चे यू नो सक्सेस के बारे में फील करते हैं कि फेम सक्सेस है, अगर आप मशहूर हैं, सारी है तो बस तब सक्सेसफुल है। But definitely, when I started my career, it has changed over time. And I think success now, what I feel, you know, हर बंदे की अपनी definition होती है। मेरे लिए success ये है कि आप खुश हैं and you're content with the work you're doing and the life you're living and you're enjoying it. That is success. And not only that, if you're making impact and changing people's lives, that's like success. That's rewarding. It's giving you the joy, right? Maya Angelou ने कहा है कि success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. So I believe in that philosophy. Yeah, that's a very cool philosophy actually, and very heartwarming to know. Mostly हमारे graduates जो हैं माशाल्लाह, I think बहुत कोई youngsters होते हैं जो अभी उस step तक पहुंचे नहीं होते जहां वो इसको इन अ बिगर पिक्चर देख सकें, लेकिन मोस्टली पीपल, इट्स सो गुड टू नो कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो नोबडी इज रियली रिलेटिंग इट टू फेम और मनी और योर डेजिग्नेशन और एनीथिंग. यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज एक्चुअली अबाउट. सो यस, दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन. थैंक यू. आप, हमने फेलियर्स की भी बात कर ली, सक्सेस की भी बात कर ली. सबको देखते हुए आप कोई टिप्स देखना चाहेंगी हमारे यंगस्टर्स को, यू नो, ग्रेजुएट्स, अलुमनाई, प्रोफेशनल्स, एनीबडी कुछ शेयर करेंगी? हाँ जी, मेरे पास कुछ टिप्स भी हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा कि यू नो यू शुड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट एंड डोंट गिव अप
एंड डोंट स्ट्रेस आउट ऑल्सो टू मच। अगर एक चीज हो गई है, और मैं अभी भी अपने आप को ये कहती हूँ क्योंकि मैं उससे गुजरती हूँ बार बार, लाइक आई एम ऑल्सो लाइक ह्यूमन बीइंग एंड गो थ्रू द सेम इमोशंस फीलिंग, कि एक चीज जब हो गई है तो उस पे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट इन योर हैंड्स, यू नो, वंस इट्स डन नाउ थिंक ऑन हाउ टू यू नो गेट बेटर, मूव पास्ट दैट, ठीक है। तो एक तो बट यू शुड नॉट लाइक stop working hard, you know, because that is a very important thing that you need to keep working on. दूसरी मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि वो जब मुल्क से बाहर भी जाते हैं या जब कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाई के अलावा जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट किया करें, और यू नो ऑफिसर पोजीशंस लें, बिकॉज उसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है प्रोफेशनली एंड ऑल्सो योर पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे लर्न करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेते हैं, फिर आपको कुछ यू नो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस मिलता है विच विल रियली हेल्प यू लेटर ऑन इन योर प्रोफेशनल जर्नी। इसके अलावा आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले कॉन्फ्रेंसेस की तो आप ज़रूर जाएं, लेटेस्ट ट्रेंड्स देखें क्या हो रहे हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स एक्चुअली दूंगी। पहली एग्जांपल तो यही कॉन्फ्रेंस पे जाने की थी। तो क्या था कि मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो चुका था कंप्यूटर नेटवर्किंग में, और मैं सीक्स में ही रिसर्च असिस्टेंटशिप कर रही थी। अब लाइक माय पाथ इज डिफाइंड, बट देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग, और वही डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर जैदी, इन लोगों ने ही अरेंज करवाई थी विद सम पीपल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक। तो वो मुझे याद है इस्लामाबाद के मैरियट में थी आई थिंक। और मैंने कोई पेपर प्रेजेंट नहीं करना था, मेरे किसी जानने वाले का भी सच कोई पेपर नहीं था मेरे ग्रुप में, मगर मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में जा रही हूँ तो क्यों ना मैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूँ। और मैंने लाइक जो मैं उस वक्त अर्न करती थी उसी में से मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन पे की एंड आई वेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस। And then there was this woman, Gigi Carmos Edwards from North Carolina, and she studied at NC State University, and she gave a talk. और उसके बाद जब वो टॉक खत्म हुई तो यू नो आई वेंट एंड मेट हर, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू शुड ऑलवेज नेटवर्क एंड स्टार्ट कन्वर्सेशंस। तो स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन अबाउट कि यू नो मेरा भी एडमिशन हुआ है नॉर्थ कैरोलिना में और मैं भी आ रही हूँ, तो मेरी भी नेटवर्किंग में रिसर्च है, तो आपके पास कुछ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ। सो शी सेड या व्हेन यू कम हियर जस्ट मैसेज मी। तो मैं आ गई और मैंने मैसेज भी कर दिया। for lunch, और बातों बातों में यू नो शी इज लाइक हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, और फिर उन्होंने लाइक मुझे डॉक्टर पैरोस से भी मिलवाया जो फिर बाद में मेरे एडवाइजर बने 7 साल। और इसके अलावा उन्होंने मुझे 2 साल की फंडिंग भी दी लाइक रिसर्च असिस्टेंटशिप की। तो आई थिंक उस स्मॉल टॉक से इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकल सकती हैं, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर दैट एंड ट्राई टू डू दैट। Another example I have is again जब मैं I think second year of PhD I was pregnant और मेरा first trimester चल रहा था, खूब morning sickness, इधर vomit ये वो। और मैं women in computer science में publicist थी उस टाइम पे, बाद में मैं president भी बनी पर उस टाइम पे थी। तो हमें कुछ हम लोगों को वो भेजते थे, you might have heard of this conference, Grace Hopper conference in computing. It's a women conference. They bring a lot of you know professors, leaders, women leaders in technology and STEM, and it's very inspiring because up like you see these big leaders there which you will probably not see anywhere else. तो उस कॉन्फ्रेंस पे मैं गई, एनीवेज वो सेशंस तो बहुत इंस्पायरिंग थे ही, और साथ साथ मैं यू नो जा के वॉमिट भी कर रही थी। बट और फिर ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि वो कितने सक्सेसफुल लोग हैं, और यू नो आई डोंट नो इफ आई हैव एवर गोना बी देयर, एंड आई वाज फीलिंग लाइक यू नो गिविंग अप, पता नहीं मुझसे पीएचडी होगी, यू नो लोगों को भी डाउट्स हो जाते हैं। तो देन आई मेट जस्ट इन पार्टिसिपेंट्स दिस मदर ऑफ 6, एंड वो उसका हाई स्कूल के बाद यू नो उसके बच्चे वगैरह हो गए थे एंड शी गॉट बिजी, एंड नाउ शी वांटेड टू गेट बैक ऑन हर करियर, और वो 6 बच्चों के साथ जो है वो कंप्यूटर साइंस में अंडर ग्रेड स्टार्ट कर रही थी। तो मेरे लिए वो एक बहुत आई ओपनिंग था। इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट से एक खातून थी, I don't remember her name now, but I think she was in the Xbox or something, and she also mentioned कि उनके भी 6 kids हैं, and she still manages a big team and is pretty successful. तो बहुत मुझे उनसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिली, and then I was like
I have to do this for my daughter, for my child. I have to be the role model. And then, I was determined after that. So I think जब भी आपको इस किस्म की opportunities मिलें या कोई मौके मिलें तो आपको जरूर अवेल करें क्योंकि इनसे आपकी पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और आप मुख्तलिफ आपको मौके मिलते हैं. True. Thank you so much. बहुत अच्छी आपने टिप्स शेयर किए हैं. I'm really glad कि आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ शेयर किए हैं बिकॉज कई दफा बातें करना तो बड़ा आसान होता है बट एक्चुअली दैट हैपेंड. और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ. वही बात जहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप इवन इफ something didn't work out as you planned, and that is so true. I wish I could actually realize that at a younger stage because मैं तो बहुत हर चीज की टेंशन लेती थी and I wish I could tell, somehow I can still tell my younger self to take it easy, it's okay, but I didn't do that. और बाकी जो आपने definitions बताई networking की बताया benefits, that is so true because it's not always about getting more opportunities, it's about a lot of learning as well. आप हर जिससे मिल रहे हैं आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, so you have to be open for that. So thank you, great examples. और एक क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूंगी वेरी क्लोज टू माय हार्ट बट हम थोड़ा क्विकली उसको कवर करेंगे. हम अक्सर इंटरव्यूज में करते हैं तो जल्दी से अपना एक कमेंट दीजिएगा फीमेल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पे कि हमें थ्योरी में बहुत कुछ नजर आता है, हमें पता चलता है कि बहुत ट्रेनिंग्स हो रही हैं हर ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ ना कुछ हो रहा है, बट समहाउ व्हेन वी थिंक अबाउट ह्यूमर, व्हेन वी थिंक अबाउट facilitating females one way or the other for their families, it's still considered a favor and not really their right. आपको क्या लगता है, is there progress, are we on the right track now finally? बिल्कुल ऐसा ही है और काफी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी हो रही है. और आई टोटली बिलीव कि आपको डाइवर्सिटी बढ़ानी चाहिए बिकॉज यू नीड टू ब्रिंग मोर पर्सपेक्टिव्स टू द टेबल. लेकिन वुमेन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के लिए आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. जैसे आपने कहा ये ह्यूमर है, ये माइंडसेट आपको चेंज करना है कि women are not inferior to you or their roles are not just wives, mothers, daughters, they are at par with you when it comes to professional life. तो आप उनको वो रिस्पेक्ट दें, ठीक है, आप उनको लीडरशिप रोल में एक्सेप्ट करें. और इस पे काफी पीपल आर वर्किंग, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स. और दूसरा ये है कि हमें मेल एलाइज की बहुत जरूरत है क्योंकि क्या होता है कि फीमेल्स आर डूइंग रियली वेल इन देयर प्रोफेशन मगर sometimes they don't have the confidence to go to the leadership positions, right? And the male allies are seeing that. तो उस टाइम पे आप सिर्फ वेट ना करें कि आप कोई पोस्टिंग डालेंगे तो what if she will apply or not. You just go and talk to her and try to convince her, right? और अगर आपको किसी चीज की कमी लग रही है तो आप उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें क्योंकि काफी दफा रिसर्च हुई है और देखा गया है कि समटाइम्स अगर कोई जॉब आती है उसमें 10 स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, राइट? अगर 3 बंदों के पास है तो वो अप्लाई कर देते हैं लेकिन औरतों के पास 8 या 9 भी होगी तो कहेंगे हाय मेरी एक स्किल मिसिंग है. So women should also play a part. They should be very proactive, apply, go for these roles, and the men should also play a part. They should respect them and treat them as they need to be treated, just like the other men they are working with, and provide them flexibility because they are wearing so many hats. They are mothers, they are daughters, they are wives, और हर रोल में विमेन से पता नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जो कि एक मैन से नहीं है and she has to fulfill those expectations. तो आप ये realize करें कि उसके इतने hats हैं and she has to do that in parallel. So provide her the flexibility so that she can focus on all these things in the different times she has available. I think that will make a more inclusive environment or help them bring forward. Definitely, this is a great answer. Thank you so much. And yes, I totally agree. Especially, it's so important to have sane male voices because अगर आप बिल्कुल neutral males हैं जो कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, that's not enough at this stage. Because males also need to realize कि आप किसी के भी facilitate कर रहे हैं तो at the end आप सिर्फ एक फीमेल को facilitate नहीं कर रहे, आप पूरी environment change कर रहे हैं, which in the long run is going to help people, females from your own family as well. Your daughters would be able to go far ahead than the
women of today. So it's important to play that part. ठीक है जी, सीरियस बातें बहुत हो गई, हम जल्दी से इंटरव्यू रैप अप करेंगे और हम आएंगे अवाम का सवाल सेगमेंट की तरफ, where yes, we try to reach out to friends of our guests. And while preparing for your interview, I discovered that we have a mutual friend who is a very close friend of mine as well as yours, Madiha Basharat. और उन्होंने आपसे 2 क्वेश्चंस किए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि आप डिज्नीलैंड गए थे इकट्ठे और इट वाज अ वेरी फन Amazing ट्रिप। trip. I can forget. We still talk about it after I don't know कितने साल हो गए हैं। 15 बहुत years, she said. 15 साल हो गए हैं। Yeah, she said that was a very fun trip. So yes, ये आंसर ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि yes, it is as fun as she mentioned. उसके बाद उन्होंने बताया कि वो आपको नॉर्थ कैरोलिना में मिलने आई थी and you guys rented a car. Then what happened? We did. मेरे पास वो कार नहीं थी और मुझे हाईवे पे ड्राइव करने से बड़ा डर लगता था। तो मदिया वाज वेरी स्ट्रांग और वो वहां पर भी करी थी, वो आई थी, उसने रेंट की। वन टाइम शी टुक ऑन हाईवे, लाइक मदिया हाईवे आ गई। बट इट वाज फन। वी वेंट अराउंड। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड मदिया से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा नेक्स्ट डिज्नी ट्रिप, इट शुड हैपन विद आवर किड्स, Oh, राइट? yeah, definitely. Inshallah. That's a good, that should happen. But आपने जब कार रेंट की तो she was mentioning कि आपको टायर प्रेशर का कोई मसला हुआ था और पता नहीं Oh, yeah. car So went into something and something fun happened that I don't yeah. want to miss. So exactly दोनों का मसला था एक्चुअली, तो क्या था कि पाकिस्तान में तो मैं ड्राइविंग करती थी, लेकिन पाकिस्तान में और मेरे बाबा ने मुझे सिखाया भी था या मामा ने टायर कैसे चेंज करते हैं, मगर यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सड़क पे पंक्चर हो जाती है, आप रुक के बाहर उतरते हैं वहां पे, तो इतने लोग जमा हो मिल जाते हैं। जाते हैं, राइट? तो यू जस्ट गो अलोंग विद दैट, राइट? तो अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। गए तो कार में प्रेशर कम था। अब हम दोनों को बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कैसे प्रेशर चेक करें। एंड ही वाज लुकिंग एट अस कि ऐसे पजल्ड खड़ी हैं, उसने ना डाल के दिया, एंड इज लाइक योर डैडी शुड हैव टॉट यू दैट। फन लर्निंग इंसिडेंट। So Yeah, that I can do it. yes, that definitely sounds fun and so glad to hear you guys had a fun time. और इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में हम नेक्स्ट डिज्नी ट्रिप के बारे में पूछेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, इतनी फन मेमोरीज शेयर की और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी एंड वेरी वेरी यूजफुल टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। Thank you, Sana, for having me here. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you everyone for watching. We'll keep bringing you our brilliant graduates to you. Allah Hafiz.